हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से बैंक स्ट्रीम की एक नई अपडेट में। तो अभी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है दैट इज रिगार्डिंग जो दोस्तों मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जो आपको पता होगा 24th को जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग रही है उसके जो अपडेट है इम्पोर्टेंट वो यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये छोटा सा अपडेट है। आई एम ट्राइंग टू डिस्कस अमंग विद ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद दी जो भी हमारा इम्पोर्टेंट अपडेट है। सो उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। सो ये एक छोटा सा कॉन्फिडेंस ही है और कुछ नहीं हमारे लिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है भी हमारी वीडियोस आप तक दोस्तों एक बेटर वे में यहाँ पे पहुँच रही हैं। और यूआर आप लोग उस जो भी हम मैटर हम उठाते हैं आप लोग उसे बड़ा इजीली डिसाइपर करके अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो उसका मतलब सिर्फ यही रहता है और इससे अलावा हमारा और कुछ मकसद नहीं है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है स्टार्ट करते हैं उसके साथ दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मीटिंग की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले साइन देख लीजिए, सभी के साइन हो रखे हैं। AIBOC AIBEAK एंड सारे के INBOC INBEF एंड D डेप्टी चीफ लेबर कमिश्नर मुंबई मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं विद दी ओरिजिनल मिनट्स ऑफ मीटिंग 24 जनवरी की। हालांकि इस जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है इसकी आउटपुट तो हमें पता ही है क्या है। स्टिल आप इसे थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अटेंडेंस इज अटैच्ड ऑन अ सेपरेट सीट। द नोटिस ऑफ स्ट्राइक सर्व्ड बाय यूनाइटेड फार्मर बैंकिंग यूनियन dated 13th of January against IBF or strike to be commenced on 30th and 31st January was seized into conciliation and date for discussion was fixed today 24th of January at 12:30 hours. So marathon decision took place on the fact is issues contained in the notice has grown, so no resolution of which compelled unions for the proposed strike. So it is revealed during deliberations that there are two forms of grievances. First are residual issues which are pending since last 2 years, and the second is fresh wage negotiations. So far fresh wage negotiation is concerned, the ID representative of IBA intimated that they are already in receipt of direction of competent authority to go ahead, meaning thereby there is no constraint to in convening a meeting or do the needful for wage negotiations. So as far as issue number one, thus in discussion in respect of residual issues are concerned, the matter is discussed at the level of IBA and up till now demands have not been negated. However, most of those matters may need elaborate discussions with the union. So needless to mention, it is very difficult for IBA to commit that the issue should be resolved without a certain period of time, and accordingly IBA appealed to come for discussion and not to go on strike, as it is neither beneficial for the institution nor for the employee and nation as a whole. तो वो नेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा नहीं है और इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छा नहीं है। सो वाइल कंसिडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अबव, द आईडी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियंस अनलाइटेड द फॉर्म फिलिंग अ मिनट्स ऑफ मीटिंग dated 23rd of June 2022 before the chief labor commissioner. As per them, even today there is, after 7-8 months हो चुके हैं इस मीटिंग को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ IBA is reiterating the same commitments without any concrete efforts to resolve. So obviously the unions cannot rely on much commitments as they are also answerable to nearly 1 million employees. आपको पता उस चीज़ का. The further submitted that if IBA wants to get the proposed strike deferred, they must be come forward with something concrete. वो थोड़ा सा concrete यहाँ पे रहना चाहिए. So the ID representatives of IBA submitted that he once again requests the unions to not to resort to the strike and come across the table for resolution of the problem. So at the same time, he also informed there, as the unions are also aware, any discussion at IBA level cannot be taken by one person, rather it is a team decision which take little time to coordinate. So as at this junction, the ID representation of union did not agree for deferment and once again requested IBA to come and some वो यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस लेके आए
and they do not have any option what to go on strike as proposed. So in the fact and circumstances mentioned above, both the parties are advised to continue deliberation in between them, so that the strike be deferred and communicated the same the undersigned through WhatsApp mail. If at all the strike is not deferred out of the continued deliberations between them, so the next date जो भी रहेगी डिस्कशन की इज फिक्स 27 जनवरी। तो नेक्स्ट डेट कल है दोस्तों। तो होपफुली यहाँ पे कुछ अच्छा निकल जाए और निकल के ही आना चाहिए, बिकॉज आज इंडिया रिपब्लिक डे है, और रिपब्लिक डे का दोस्तों हम थोड़ा सा आ, आप लोगों को बधाई भी देते हैं। और 74th रिपब्लिक डे है, और यहाँ पे 27th कल है आफ्टर रिपब्लिक, तो कुछ तो पॉजिटिव हमारे लिए निकल जाना चाहिए फॉर ऑल दी बैंकर्स, बिकॉज इकॉनमी सारी बैंकर्स ने संभाल रखी है, एंड वी आर द फाइनेंशियल सोल्स ऑफ दिस कंट्री। सो विद दिस आई एम अडायू फॉर दिस सेशन। सो please take care all, and please subscribe to channel if possible, and please like the video if possible, and stay tuned for the further updates. So bye bye, please take care all.